Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. The weeks leading up to menstruation are typically uncomfortable or dysphoric for the majority of women of reproductive age. Even though symptoms are frequently not too severe, they can still significantly impact daily activities. There is robust empirical evidence to support the existence of a severe premenstrual disorder that causes significant functional impairment. About 5% of all women of reproductive age consistently report having severe PMS. PMS management could be difficult. It's critical to establish a precise diagnosis early on rather than relying solely on the patient's diagnosis. Preferably, this assessment should be carried out by a gynecologist. Hello everyone, I'm Dr. Samya Saluja from Tip Media, and today we'll talk about premenstrual syndrome. And to explain the difficulties that all women face, we have with us renowned obstetrician and gynecologist Dr. Mitali Rathore. Dr. Mitali Rathore, a young and vibrant obstetrician and gynecologist, has spent the past 4 years practicing in the lovely city of Ahmedabad. Dr. Mitali is a trained laparoscopic surgeon and sonologist. In addition to over 500 gynecological operations, she has safely performed over 3,000 vaginal and C-section deliveries. Dr. Mitali not only practices holistic medicine, but has been actively engaged in conversations on periods, reproductive health, hormones, and contraception on platforms like LinkedIn, Instagram, YouTube, and Quora for the past 1.5 years. Dr. Mitali, Tip Media welcomes you. Thank you so much. And as you are well aware, Dr. Mitali, that women frequently experience emotional changes, particularly before their periods. So to start off this conversation, I'd like to ask, what exactly is premenstrual syndrome? Okay, so this is a really good question. We should say 40 to 50% of women who faces changes in their emotions and behavior, as well as their eating patterns, sleeping patterns, their libido, their energy all throughout the day, every single thing approximately 10 days to 2 weeks prior their periods. Okay, but along with the normal changes, there are some degree of variations are also there. They are into the exaggerating manner. तो हमको वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि अप टू सर्टेन लेवल दिस इज व्हाट वी कंसिडर्ड एज नॉर्मल, और इससे ज्यादा अगर कुछ होता है देन दैट इज कंसिडर्ड एज नॉट नॉर्मल. सो पीएमएस इज अ वेरी अम्ब्रेला टर्म कि राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इंस्टाग्राम में अगर किसी को पीरियड से पहले भूख भी लगती है देन दे आल्सो कंसिडर कि इसको तो पीएमएस हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम हो गया, सिंड्रोम, बट दैट इज entirely correct. So when it comes to premenstrual syndrome, there are certain symptoms. The number one being sore breasts. कि ऐसे चलने के बावजूद भी while a woman is walking, she feels little bit around tightness around her boobs or tingling sensation. Okay. Second thing being emotional roller coaster. मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा anxious हो जाते हैं, बहुत panics हो जाते हैं, बहुत सारे overcrowding of thoughts हो जाता है. That is a third thing being sugar cravings and salt cravings. There are lots of women who faces कि उनको बेकरी वाले प्रोडक्ट्स खाने की इच्छा बहुत हो जाती है, या फिर कोक एंड शुगरी आइटम्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देयर इज आल्सो वन ग्रुप ऑफ वुमेन के जिनको सॉल्ट रिलेटेड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होते हैं. Right. But the grades of these symptoms are very much different for different women. Right. थोड़े बहुत minute changes बहुत सारे लोगों को लगेंगे. But when the severity is so much, then one should always consider taking the medical help. For example, एक example देती हूँ patient का. उनके husband को पता नहीं था कि PMS क्या होता है, but just prior her periods वो अपने husband को मारने लग जाती थी. And जैसे ही उनके periods आ जाते थे, she just went into the very much normal state. और वो आके उनको ऐसा बोलती थी कि उनको पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है. Right? This grade of emotional instability is very much uncommon और उनको मेडिकल लेनी चाहिए.
राइट। सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया डॉक्टर मिताली के पीएमएस के जो सिम्टम्स हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, बट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल जब उनका एक एग्जैजरेशन उन सिम्टम्स में आ जाता है तो हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफरेबली कंसिडर करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। And a psychiatrist as well into the severe case scenario, because the severe case scenario of PMS is PMDD, राइट। premenstrual dystrophic disorder. ओके। तो फिर कैन वन डायग्नोज वंस ओन पीएमएस? अगर हमें पता हो कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक महिला या एक लड़की अपने आप को एक डायग्नोसिस दे सकती है पीएमएस का कि मुझे पीएमएस हो रहा है। और ये डायग्नोसिस या फिर ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एक मेडिकल प्रोफेशनल की डायग्नोसिस से किस तरह से डिफरेंट होती है? तो यस, लड़की जो होती है वो खुद से डायग्नोस 110% कर सकती है, बिकॉज इमेजिन अ डॉक्टर इज एन एक्सटर्नल आइडेंटिटी. जो Right. सिम्टम फील करते हो दैट इज योर बॉडीज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ. Right. ठीक है, तो अगर कोई बाहर के इंसान के पास हम जाके देंगे, he Mhm. or she also going to listen to us, और उसके बाद ही ऐसे द फाइनल डायग्नोसिस होगा. पीएमएस को डायग्नोस करने के लिए कोई ऐसे ठोस ब्लड टेस्ट नहीं है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा. ऐसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू पीएमएस. सो दैट इज व्हाई क्लिनिकल कोरिलेशन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. तो अगर एज ए नॉर्मल ह्यूमन इमेजिन कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मुझे सोर बुक्स होते हैं, मुझे इमोशनल क्रैंकीनेस होती है, मुझे शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग और एसिडिटी वगैरह रहता है, पीरियड बुक्स के जैसा भी रहता है, देन मुझे पता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड मी that just gets exaggerated 1 week or 2 weeks prior my periods. Matlab something is there. I might not be 100% correct with the diagnosis, but of course 110% I will be the first one who notices this. Right. And as a doctor, is receiving treatment advised for managing PMS? And if so, what medications can be used to lessen its symptoms? Okay, so when it comes to PMS, the majority of time what happens is that with the conventional medicine, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलते हैं, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि मैं डॉक्टर हूँ इसके लिए, मैं किसी की तरफदारी में कह रही हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम व्हाट आई हैव सीन विद माय प्रैक्टिस इज दैट मेडिकल गैस लाइटिंग इज रियल. मतलब आप डॉक्टर को पास जाके बोलते हो कि मुझे ये हो रहा है, स्टिल नॉट रेडी टू बिलीव अस कि नहीं. मेजोरिटी ऑफ टाइम मेरे पास बहुत सारी यंग गर्ल्स आती है, तो वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर मानने को रेडी ही नहीं है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज कि कुछ लोग तो ऐसे बोल के भगा देते हैं कि अभी औरतों को तो होना ही है, ये आप तो हार्मोनल हो. ऑफ कोर्स आर हार्मोनल, एवरी सिंगल वीक अवर हार्मोन्स आर गोइंग टू चेंज. तो हार्मोनल तो कौन नहीं होगा. दैट इज व्हाट अवर फिजियोलॉजी इज, राइट? सो yeah, so see, because we do not have a sure diagnostic method, sometimes हो जाता है, but still holistic way of management is a real management. Under the conventional approach, they just prescribe you 21 days of combined hormonal birth control pill कि आपको 21 days तक लेनी है, 7 days तक नहीं लेनी है, but that has nothing to do with what you are feeling inside, right? When birth control pills are prescribed without any proper indication, that does more harm than good. And for PMS, that is 110% not the correct diagnostic medication. तो वो नहीं लेनी है. So that is why holistic way of approach does the magic. Majority of time with PMS, there are lots and lots of women जिनको underlying nutritional deficiencies होती है, like vitamin B12, B5, niacin, folic acid, magnesium. तो ये सारी चीजें हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड वर्क हमको सप्लीमेंट करनी चाहिए, अलॉन्ग विद विटामिन डी डेफिशिएंसी. इवन दो इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए सन राइजिंग कंट्री, हमारे वहां पे 70 to 80% women faces this issue of vitamin D deficiency. उसकी वजह से उनको ओव्यूलेशन नहीं होता, इरेगुलर साइकिल्स होती है. अलॉन्ग विद दैट थायराइड हार्मोन्स के लेवल भी चेक कराने चाहिए. डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड वर्क एंड लाइफस्टाइल हम उनको सप्लीमेंट करते हैं. उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस आर रियली रियली इम्पोर्टेंट. अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाते हो, लंच में पिज्जा खाते हो और डिनर में बर्गर खाते हो, देन नो मेडिकेशन एंड नो सप्लीमेंट आर गोइंग टू डज दैट जॉब, राइट? दैट इज द क्लियर सिचुएशन.
So, of course, every single thing starts with food. Food is considered as a fuel. So relying upon the foods that is suited for, someone, the taking care of the sleep, taking care of the meal and supplementation along with exercise. ये Right. सारी चीजों को हम combine करके करते हैं. That is what we consider as a holistic approach and not the blanket approach कि सबको पिल ही दे दिया. Okay. And from the holistic medicine, now we switch to certain home remedies. So, can natural remedies help with this PMS symptom relief? So yes, DIY का जमाना थोड़ा सा कम हो गया है, पहले के जैसा नहीं है. But still, I think everything starts from home and how you talk to yourself and how you take care of yourself only. जी. So yes, balancing our meals, each and every single meal, which contains at least 25 to 30 grams of protein consumption with every single meal, relying more upon the whole foods and वो ही foods खाना जो आपकी body को suit करते हैं. For example, if I eat saffron, वो महीने मेरे periods बहुत ही ज्यादा आएंगे. That is, I can consider as a flooding. तो अगर मुझे पता है कि मैं ये खाऊंगी और मुझे ये होता है तो मैं क्यों ही खाऊंगी, right? जी. Yes, उसके अलावा Epsom salt baths, they does help with that cooling and soothing, relaxing type of activity. Body oil massages like Abhyanga, they do really does the commendable job as well. उसके साथ साथ yin yoga practices, they also helps a lot. And you just mentioned about sore breasts and emotional swings. So, अब किसी किसी के केस में ये बहुत extreme पर भी चला जाता है. So, can any natural remedy help such girls or women? Do we have some natural remedies for these? No, unfortunately not. Okay. Into which omega-3s and vitamin E capsules, they really. But see, natural remedies का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 tablespoon flax seeds खाए और आपको सही हो गया. That is not be considered as a natural remedies. Right. अभी पहले से blanket statements नहीं चलते. If flax seeds are, my body sometimes won't be able to digest it and properly assimilate it. कुछ लोग flax seeds की एलर्जी भी होती है. अच्छा. I think अगर मैं Instagram या YouTube की बात करूँ तो there are lots and lots of YouTube shorts या फिर Instagram reels. वो लोग ऐसा बोलते हैं कि periods आने से पहले ना soak करके sesame seeds खानी चाहिए. अगर मैं अपनी बात करूँ और अगर मैं 40% population की बात करूँ तो सबको sesame से एलर्जी है. Right. ठीक. हाँ, तो हम सबको ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन कि ये DIY है, सबके लिए ये सूट करता है, बट मुझे सूट करता है या नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू थ्राइव फॉर. And that is why we should approach, our doctor for. The doctor can probably guide me better than I would just simply blindly follow some reel or some Instagram, maybe DIY option. Yes. Okay. So, what additional complementary therapies are used to treat PMS other than the holistic medicine approach or maybe some relieving medication at home? Are there any complementary medication or therapeutics which is available? Yes, so there are some things that are available in the Chinese medicine practice. They do the acupuncture. Along with that, with the Indian medicines, we have Abhyanga, which means whole body massage. उसके अलावा Epsom salt bath. So ये सारी चीजें हैं. The major focus, अगर हम देखें कि हमने ये भी किया, Chinese needle practice भी की, acupuncture भी किया, सब किया, तो इसके पीछे का crux अगर हम देखें, तो majority of time द ल्यूटियल फेज, मतलब पीरियड्स आने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम जो होता है, पिछला टाइम, उसके वक्त में द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हैज रियली कामिंग इफेक्ट. तो जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन, तभी ये सारी चीजें होती है. व्हेन द इन्फ्लेमेशन इज हाई, व्हेन द प्रोजेस्टेरोन लेवल इज लो. तो इफ वी लुक एट द क्रक्स ऑफ ऑल द थिंग्स, हमको रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और ये सारी चीजें मिला के that helps with soothing and calming down our body. It stimulates the parasympathetic nervous system. Okay. So it helps a lot. So we sincerely appreciate your presence today, Dr. Mitali. I'm hoping that those who are going through these PMS symptoms will find this very helpful.
And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again, Dr. Mithali.